Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. In 1990, Max Planck proposed his quantum theory of radiations. According to this theory, the energy of an electromagnetic wave is continuously distributed over the wavefront. Instead of electromagnetic wave travels in the form of discrete packet bundles of energy called quantum. One quantum of light radiation is called the photons. The energy of each photon is E is equal to hv, where h is Planck's constant and v is frequency of radiations. Here h is Planck's constant and v is frequency of radiation. The dimensions formula of Planck's constant is m into t inverse. The momentum of a photon is equal to hv upon characteristics of photons. What are characteristics of photons? In the interactions of radiations with matter, radiations behaves as it is made up of particles called photons. In interactions of radiations with matter, radiations behave as if it is made up of particles. अगर वो particles से बने होते हैं तो फिर वो photons कहलाते हैं. A photon travel at a speed of c in vacuum 3 into 10 to the power 8 meter per second. A photon travel at a speed of light c in vacuum. The inertial mass of a photon is given E is E upon c square, h upon c lambda, hv upon c square. Photon travel in a straight line. Photon travel in a straight line. Always travel in a straight line. Irrespective of the intensity of radiations, all photons of a particular frequency v or wavelength lambda have the same energy and momentum. Energy of a photon depends upon frequency of the photon, so the energy of the photon does not change when photons travel from one medium to another medium. Energy of a photon depends upon frequency of the photon, so the energy of the photon does not change when photons travel from one medium to another. It has zero rest mass. The photon exits as rest. Compton effect. When a monochromatic beam of falls on a target containing free electrons, it is scattered. As a result, the electrons recoil and scattered. Radiation has wavelength longer than incident. wavelength है तो क्या होगी, longer होगी incident से. This effect is called Compton effect. इस effect को हम क्या कहेंगे, Compton effect. एक बार और read कर लेते हैं. When a monochromatic beam of falls on a target containing free electron, it is scattered. As a result, the electron recoil and scattered radiation has wavelength longer than the incident one. This effect is called Compton effect. Lambda minus lambda is equal to lambda dash minus lambda is equal to lambda is equal to Compton shift. से क्या कहेंगे, Compton shift. ओके, ये स्कैटर्ड फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन है. टारगेट इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट. रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिकॉइल ऑफ इलेक्ट्रॉन. देन स्कैटर्ड फोटोन, दिस इज स्कैटर्ड फोटोन. जहाँ पर वेयर m नॉट इज रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, h अपॉन m नॉट c. Compton shift डेल नंबर इज मैक्सिमम when phi is equal to 180 डिग्री. क्या होगा, मैक्सिमम होगा जब phi 180 डिग्री होगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स, EK is equal to hc upon lambda minus hc upon lambda dash. Directions of recoil electron,
डायरेक्शन क्या होगी, विकर्ण इलेक्ट्रॉन की tan थीटा इक्वल टू लैम्डा साइन फाई लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉस फाई. Compton wavelength of electron is equal to h upon m naught c is equal to 0.024 Angstrom. Maximum Compton shift is equal to 2h upon m naught c is equal to 0.048 Angstrom. Next topic is dual nature of radiations. Okay. With the experimental verifications, it was proved that the light has a dual nature. Light has a dual nature. With the experimental verification, it was proved that the light has dual nature. In some phenomena, it behaves like wave, and in some object with which the particle interacts. In 1924, French physicist Louis de Broglie suggests like radiations matter to have dual nature. इनके दो नेचर होते हैं, या तो वो पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं या तो फिर वो वेव के फॉर्म में होते हैं. इनके दो नेचर्स होते हैं. इसी को हम कहते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. इसे कहते हैं कि रेडिएशन के दो नेचर होते हैं. एंड नेक्स्ट इज मैटर वेव और डी ब्रोगली वेव्स. अब मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स क्या होती है? A wave is associated with every moving particle called matter or डी ब्रोगली. जो वेव एसोशिएट करेगा हर मूविंग पार्टिकल के साथ, उसे ही हम मैटर और डी ब्रोगली वेव कहेंगे. अब की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं. सो मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर. जो मैटर वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते नेचर में. मैटर वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स. वो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, लेकिन ट्रैवल इन वैक्यूम. वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं. मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. जो मैटर वेव्स होते हैं वो डिपेंड नहीं करते चार्ज पे. इसका मतलब दे आर एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल्स. कि वो हर मूविंग पार्टिकल के साथ क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और अनचेंज कर सकते हैं. The phase velocity of the matter waves can be greater than the speed of the light. The phase velocity of the matter waves can be greater than the speed of light. The number of de Broglie waves associated with nth orbital electron is n. Now, de Broglie wavelength. Let us read about de Broglie wavelength. If a particle of mass m is moving with velocity v, अगर जो पार्टिकल है जो एक v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. then the wavelength of de Broglie was associated with it. तो जो वेवलेंथ है वो एसोसिएट करेंगे किसके साथ, डी ब्रोगली वेव्स के साथ. बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन टी इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. फॉर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v, lambda is equal to 1 h upon 2 mv. Some important table. इसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ दी गई है. इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स, थर्मल पार्टिकल्स. एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. The wave nature of the material particles are measured by de Broglie was confirmed by Tensions and Chadwick in the United States by G.P. Gibbs in Scotland. This experiment verified the wave nature of electrons using alloy crystals. Tension Chandler found the intensity spectrum of electron was not the same but different at every angles.
So X-ray. X-ray. When cathode rays strike on heavy metals of high melting point, when cathode rays strike on a heavy metals of high melting point, the very small fractions of its energy convert into a new type of heat. तो इसकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट की एनर्जी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें एक नए टाइप के वेव में, जिसे हम एक्सरे कह सकते हैं. और इसे डिस्कवर किसने किया था, रॉयल्टर. नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे. एक्सरेज की कुछ प्रॉपर्टीज. X-rays are electromagnetic waves of wavelength ranging from 0.1 Amsler to 100 Amsler and frequency ranging from 10 to the power 16 Hz to 10 to the power 18 Hz. Hard X-ray have lower wavelength and high frequency. जो hard X-rays होते हैं उनमें lower wavelength होते हैं और high frequencies होते हैं. So first point is X-rays are produced in cold HT. The intensity of X-rays depend upon the voltage across the end of voltage tube. If total energy of fast moving electron transferred to X-ray photons, then its energy EV is equal to HV is equal to Hc upon lambda. Wavelength of emitted X-ray is given by lambda is equal to Hc upon EV. जहाँ पर H क्या है, Planck's constant, C speed of light, E electronic charge, B potential difference applied across the ends. अब एक important चीज़, characteristics of X-rays. X-rays are of two types, continuous and characteristics. While the former depends only on the accelerating voltage, B, the latter dependent on the target used. So continuous X-rays क्या होता है? The continuous X-ray produced at a given accelerating potential B. Continuous X-ray produced at a given accelerating potential B vary in wavelength, but none has a wavelength shorter than a certain value. This maximum wavelength corresponds to the maximum energy of the X-rays, which turns in equal to the maximum energy QV or EV of the static electrons, which is lambda is equal to Hc upon EV. अब क्या करें, अपन सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज. आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ H, C and E, we obtain following simple formula for lambda.